So very good evening all the participants. Today we would like to have a look at the business laws and allied laws including case studies because all this covers 19 marks and 19 marks out of 200 is a substantial figure. So we have to be very thorough and very careful while reading these aspects. Some of the aspects we have already covered in the previous two sessions. Primarily, we covered Companies Act, right? And some of the case studies also. So now, let us, before starting this session, let us hurriedly go through what we have already covered, right? My PPT is available. My PPT is visible to you. Is it visible? Yes. Yes, sir. Okay, okay. So, Companies Act, LLPs, partnership. So these are the things we would like to cover. Most of the provisions regarding Companies Act we have already covered. So any question on this slide before we move to the next? We have already covered this. Yes, sir. Private placement, share capital. So I'll hurriedly go through whatever we have already covered and then we'll concentrate on slides which we have not yet covered. So I've tried to cover it question wise also so that if they ask you 1 mark question on this. So they will be asking you 11 questions of 1 mark out of this and then 4 questions of 2 marks each on this. So basically, I think through slides you should be able to answer, if not all the 11, then at least 8 to 9 questions out of this. Because these are also based on the feedback from students, right? So most of the aspects I've tried to cover. So if you go through, but you should remember each and every slide by heart. इतना आपको करना है. देखो बहुत कम है. 296 स्लाइड्स क्या होती हैं 19 नंबर के लिए. किसी भी स्लाइड पर आप मुझे रोक सकते हैं कि भाई इसके बारे में समझ में नहीं आया है. ठीक है. अदरवाइज आई विल कीप मूविंग जो मैंने कर दिया है अभी तक. ये मीटिंग्स वाला हमने डिस्कस कर लिया था. आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी. CSR we had discussed. Registered valuers, board composition and KMP. Section 8 companies we have covered. ये सेक्शन 8 की केस स्टडी ये भी हमने कवर कर लिया था. 1% company we have covered. Sometimes they ask you a complete case study on 1% company या section 8 company या compromise arrangement and amalgamation and winding up. These are the 4 favorite topics. Besides this, they sometimes set up a case study on these meetings also. जनरली ये 4-5 ही हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वी हैव नॉट कवर्ड. ठीक है. तो नाउ लेट अस ट्राई टू कवर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सो आई वुड रिक्वेस्ट काजल किरण राय जी टू प्लीज read and explain to us the various provisions of Indian Partnership Act, and I will chip in wherever it is required. Kajal Kiranji, please. Yes, sir. Section 4. Relation between persons who agrees to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. So persons include partners, collectively the firm, and the name of the firm is the firm name. Now, section 5 is relation arises from contract and does not arise from the status. Section 7 speaks that partnership can be at will where there is no fixed term. And section 8 says that if for particular partnership there is a single venture. Section 8. Now, my question on this is section 4 says that it is the relationship between persons who agree to share profits. So whether losses are also included? Sir, losses are Yes. also included, sir. Yes. So it is understood that if there is a loss, then also it will be shared by all. But Yes, whether there can be different profit sharing ratio also? Yes, Yes, sir, sir. they can. Yes.
But if there is nothing written in the partnership deed, then what shall be the assumption? Equal. Equal. Equal, right? Yes. Please now go to these 5 essentials. 5 essentials: agreement between two or more. There should be an agreement between two or more persons. Business must exist. That is, there must be a trade, occupation, or profession, and there should be sharing of profits of that business. So, partnership firms mutual agency occurs. That is, business carried on by all or any acting for all is the real term for partnership. Maximum partners can be 50. It comes in Rule 10, Companies Miscellaneous Rules. Sharing of profit is evidence of partnership, not conclusive. Section according to Section 6. Now there is a question. There are 2 persons who say that we will do charity. Can they form partnership? No, sir. No. उसके लिए Because सेक्शन 8 की कंपनी होगी. हाँ, तो इस केस में either it could be an association of persons. If they don't want to go through the company route, वो बोले भाई ठीक है, हमें तो चैरिटी करनी है बट हमें कंपनी भी नहीं बनानी है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना. Yes, sir. हम तो चैरिटी करेंगे बट वी विल नॉट फॉर्म ए कंपनी. कंपनी में बहुत फॉर्मेलिटीज हैं. तो देन व्हाट इज द रूट अवेलेबल टू देम? So, charity is Section 8 company. नहीं, वो कहते हैं हम सेक्शन 8 बनाना ही नहीं चाहते. They can form LLP. नहीं, एलएलपी भी नहीं बना पाएंगे ना. एलएलपी इज ऑल्सो फॉर बिजनेस ओनली. वो कहता है हम एलएलपी ये सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते. देयर आर टू मेनी फॉर्मेलिटीज. कौन एमसीए की फाइलिंग करता रहेगा? यू सजेस्ट कि भाई क्या फॉर्मेट होगा फिर उस केस में? Association of persons. राइट, वेरी गुड. सो इट कुड बी आइदर ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस which is treated as unregistered, right? चलिए, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड द माइनर. यस प्लीज. Types of और इसको partners. ना काजल जी आपको एक्सप्लेन करते हुए बताना है. ये तो लिखा हुआ है Okay, ना? sir. आप पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जैसे लेक्चर दे रहे हो आप ऐसे बोलना है. हाँ. Yes, sir. Okay, sir. So, types of partnerships. There are 2 types of partners. That is actual partners and active. Actual means takes and active. Actual or active means that these partners are actively participating in the partnership firm. That is, they takes active part. And another one is sleeping or dormant partner. That is, they are not taking active participation, but they give their capital, or there is no active role but they give their capital, so they are known as the sleeping partner. Now, nominal partner. Nominal means they lends their name but they do not give their capital or share. For example, if Amitabh Bachchan is giving ad for some company, then he can be a nominal partner in, but because he lends his name but he is not sharing any capital or shares there. Now, partner in profits only. There can be partners who can be partners in profit only, but that should be written in an agreement. Now, sub partner, that is shares a partner's profit. Partner by holding out is given in section 28, that is liable to those who give credit on the representation. So suppose there are 2 people who are sitting in a shop, right? A customer enters and Mr. A, who is the actual partner, he introduces to his customer that please meet Mr. B, he is my partner. And B doesn't say anything. He simply smiles. So then he will be treated to be partner by holding out. He will be liable to those who give credit on their representation. Suppose Mr. B is credit worthy person and customer supplies the goods on the goodwill of that person. So he will be considered to be partner by holding out, provided it can be proved. Yes, please. Yes, sir. There can be incoming and outgoing partners. Now, So these minor. are the various names which could be given. Yes, please. Minor admitted, section 30. A minor cannot be admitted as a partner but may be admitted to the benefits with the consent of all the partners. A minor can be entitled to the share of profits and property and may inspect and copy accounts, and a minor has a limited liability to his share and is not personally liable. And on majority, and after attaining majority, after 6 months,
So he can give a public notice whether he wants to Actually, he continue. has got a 6 months tenure. Now he has to decide whether he wants to become or he doesn't want to become a partner. Suppose he has attained the majority today. Now he has got 6 months time. So he can elect either to become a partner or not become a partner. But in both cases, he has to give a public notice. Yes. So if he chooses that he wants to become a partner, then he is liable as a full partner from the date of the admission. Acha, can you just check one fact? If anybody, MBS Kumarji or anybody who is having a copy of the Partnership Act, there is one question. Suppose there is a minor and he elects not to become a partner. Then also is he required to give notice or notice is required only when he elects to become a partner? This is my question. So all Sir, of you can नहीं go भी through. करेगा, then also he has to inform. नहीं, एक बार सेक्शन पढ़ लीजिए, सेक्शन 30 पढ़ लीजिए बुक खोल करके. ठीक है सर. सभी लोग 1 मिनट लगेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा. मेरी वेबसाइट पर भी होगा सेक्शन 30. Sir, within 6 months of attaining majority or gaining knowledge of admission, whichever is earlier, the minor must give public notice whether he elect to become a partner or not. If no notice is given, he is deemed to become a partner. Right. So now the scenario is clear that in both the cases, he has to give a notice whether he elects to become or not become a partner. And if he doesn't say anything, then is deemed to be a partner. है ना, यही है ना? हाँ जी. Yes. ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई ना. क्योंकि वो थोड़ा भी डाउट हो तो आप सेक्शन को रेफर कर सकते हैं. यस. Next slide, sir. यस. Rights and duties of a partner. So duty of good faith, proof, accounts and full information is given in section 9. Indemnity firm for loss आपको by पहले सेक्शन पढ़ लेना है. सेक्शन 10 says that there is a clause for indemnification of firm for if fraud is perpetrated by any partner, then he has got a liability to indemnify the firm. Okay. है ना? पहले सेक्शन पढ़ लीजिए फिर एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ जी. Okay. According to section 12, the partner can take part in business access and copy books. Then no remuneration is given to the partners unless agreed in the agreement, and they share profits or losses equally. If there is no agreement, then they can share the profits and losses equally. Right. According to section 13, interest on the capital is only out of profits and interest on advances at the rate of 6% per annum. And indemnified for acts in ordinary and proper conduct of business. They have to indemnify the other partner in the ordinary and proper conduct of business. Right. So if a partner is acting in his ordinary course of business and his conduct is proper, and if there is a loss, so he has a right to get indemnified. Right? This is the meaning. Yes, please. Now, property of the firm. According to section 14, property originally brought in plus acquired for the firm for good. Okay. The property is originally brought in and or if acquired for the firm or for goodwill is given in section 14. It is held and used exclusively for the business according to section 15. And personal profit, section 16 says that personal profit from firm transactions or use of the firm is accountable to firm. Yes. So if a partner gets some personal profit from the transactions of the firm, so what happens? Suppose a partner is sitting in his shop, right? A customer comes and he simply pockets the profits. So then he is accountable to the firm because he has attained personal profit. If it is proved that, okay, from CCTV, it is proved that he did not account for that particular transaction. So he is accountable to account for the personal profit which he derived from the transactions carried on behalf of the firm. Right? Similarly, if he uses the property of the firm, then also
he has to account for the profits which he gained out of such transactions. Yes, please. Now, profit from a competing business account to the firm. If Right. we are thinking that if he is receiving any profit in the and he is accountable to the firm for that profit. Right. So the example could be that there is a shop and he opens a shop in another city by the same firm name, right? He opens a separate bank account. So he's doing a competing business. So he has to account for those profits to the firm. Okay, sir. So according But to there section, could be another question. Suppose there are two partners in a business. Now one of the partner, he opens a sole proprietorship firm also, right? And it is in the same business. So can he do so? My question again, I'll again repeat my question. There are two partners in a business. So they are doing a business. One of the partner opens another shop which is doing a similar business, right? So whether he is liable to account for that profit also, yes or no? yes, sir, Yes, because sir. this in that area he cannot open that business where Right. that. Yes, sir. Basically, all these things will be decided by the partnership deed. So in partnership deed, normally all these things are accounted for that, okay, we will not do a competing business and all those things. So if it is proved that he is giving competition, he is doing competition to the firm, so then it will be treated, he is liable to account for the profits. But suppose there is another angle to this. There are two partners. Now, son of one of the partners opens another proprietorship firm and is doing similar business. Then, whether he can be held accountable? Yes or no? Yes, sir. Related party के case. नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके खानदान में कोई बिजनेस कर ही नहीं सकेगा उसका. दो पार्टनर है. They can do One it. son of one of the partners. So, son of Hmm. one of the partners opens another shop. Hmm. So here it will be decided based on the facts of the case and on the clauses in the partnership deed. So normally these things are made clear in the partnership deed. But if it is proved that who is deriving profits from a competing business, basically competing business means using the goodwill of the firm, using the contacts of the firm, right? Because when you do business, so contact details of all the customers and suppliers are available to you. So if you derive any advantage out of it, then you are liable to account for the same. This is the meaning basically. Yes, please. Okay, Yes, sir. Kajal ji. Yes, the rights and duties. It's over, na, sir. Hmm. हो गया ये? हाँ जी. चलिए. Agency and implied authority. Hmm. So according to section 18, every partner is an agent of the firm. Hmm. According to section 19, implied authority binds the firm for acts in the usual course of business. So in the usual course of a business, every partner is liable. Hmm. According to section 20, partners may extend or restrict authority by contract. So they have to if they want to restrict anything or extend anything, they have to mention it in the agreement. Then according to section 22, the act in firm's name or manner showing intent to bind firm. If they are doing any sort of act in the name of the firm, then that manner also, that conduct also shows that he is a partner. Hmm. No implied authority. Submit dispute to arbitration, open bank account in own name, compromise claim, withdraw suit, admit liability, acquire or transfer immovable property, enter partnership. So for all these things, there is no implied authority. So if he wants to submit the dispute to arbitration, he cannot dispute, he cannot submit on his own. So either it should be expressly written that okay, he is authorized, or he has to take consent of the other partners. So nothing is implied in respect of these acts. Okay? Suppose he wants to open a bank account in his own name, so then he cannot open. Okay, sir. Okay? Okay. Yes, Okay. please. Next. Liability of the partners. Hmm. So according to section 25, the partners are liable for acts of firm is joint and several. Hmm.
according to section 26, firms liable for partners wrongful act in ordinary course. According to section 27, firm is liable for misapplication of money or property. According to section 31, an incoming partner is not liable for pre-admission acts. So, estate of a deceased or insolvent partner is not liable for post-event acts. So here we can correlate it with individual insolvency also. So what it says, estate of a deceased or insolvent partner is not liable for post-event acts, post the death of the partner. But what we studied in case of bankruptcy, in case of bankruptcy, we have written that bankruptcy once initiated, it can be continued, it shall be continued as if that partner was alive, as if that person was alive, as if that bankrupt was alive. ठीक है? Now we have to correlate these two facts. अब इन दो फैक्ट्स को हमें कोरिलेट करना है. और कोरिलेट कैसे करना है? इसका एक इंस्टेंस बनाना है और इंस्टेंस बना करके आपको ग्रुप के अंदर डालना है. समझ गए मेरा पॉइंट आप? यस सर, इसमें स्टेट ऑफ ए डिसीज जो है वो उसके बाद उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसमें तो वो लायबल रहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, लीगल हेयर के पास भी बैंकरप्ट का मतलब वो चलता है. हाँ, अब मेरा कहना यह है कि वहां पर दो प्रोसेसेस है, वन इज इंसॉल्वेंसी, अनदर इज बैंक्रप्सी. इंसॉल्वेंसी में ये पॉइंट क्लियर नहीं है वहां पर नहीं, आईबीसी में, वहां नहीं है सर, सिर्फ वहां डेथ बैंक्रप्सी में लिखा हुआ, इंसॉल्वेंसी में नहीं लिखा हुआ. सो हाँ यस. now the question is that if insolvency proceedings are going on, he is not yet declared bankrupt, then what will be the situation? So we have to consider both the provisions and write in the group कि भाई what shall be the position. ठीक है? नहीं तो आप एक प्रॉपर क्वेरी फ्रेम कर दीजिएगा, आई विल ऑल्सो आंसर. ठीक है जी? तो ये वाला कंसिडरिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, पार्टनरशिप एक्ट भी हमें स्टडी करना है और वो जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाला, बिकॉज वॉज दिस आईबीसी केम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वर ओमिटेड फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट एंड दे वर इंक्लूडेड इन आईबीसी. ठीक है? ये तो मालूम ही होगा आपको कि कुछ प्रोविजंस डिफरेंट एक्ट से निकाल करके आईबीसी में ले गए. कंपनीज एक्ट में से कुछ निकाल लिया, कुछ यहां से निकाल लिया. तो ये वाला जो प्रोविजन है ये यहां पर अभी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, और वहां पर इंसॉल्वेंसी में क्या पोजीशन है और बैंक्रप्सी में क्या पोजीशन है, दिस वी हैव टू डिस्कस इन द ग्रुप आफ्टर प्रॉपर स्टडी. ठीक है जी? ओके सर. चलिए नेक्स्ट. Now registration. Registration is optional in case of partnership firm. It is not compulsory, and application to registrar of firms is with prescribed fee and particulars, and may be done at any time, even after formation or before suit. And statement shall be signed by all the partners and entry in registrar of firms. And by registration, the name they can change the name place partners to be notified to the registrar. If there is a change in the partnership deed of the name place partners, then it should be notified to the registrar. Right, very good. Yes. Now, what is the effect of registration is given in section 69. So, a partner cannot sue the firm or co-partners to enforce a contractual right. Moreover, a firm cannot sue third parties to enforce a contractual right, and no claim of set off exceeding rupees. So if a firm is not registered, that they cannot claim a set off exceeding rupees 100. Exceptions are that suit of for dissolution or accounts of a dissolved firm, realization of a dissolved firm's property, or small claims more than 100 rupees, more or equal to 100 rupees. A third party can always sue the unregistered firm. ये एक्सेप्शंस वाला एक्सप्लेन कीजिए दोबारा. एक्सेप्शंस वाला जो है, प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट. मुझे समझ में नहीं आया क्या पॉइंट है ये. Sir, this thing is given that if there is no registered, if the partners are not registering their firm's name, then they cannot sue to the third party, or they cannot sue. नहीं, एक्सेप्शंस वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में. एमवीएस कुमार जी, प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट regarding exceptions. What is this point? It's, actually it's an opposite effect. Right. So the
or whether the firm is registered or not, still a suit for dissolution can be filed. Yes. If you want accounts of dissolved firm, you can ask for the accounts. If you want to realize something from firm's property, you can. And if the claims are less than or equal to 100, then also you can recover. This is the point. So this is the exception that the non-registration does not affect these things. Right? Yes, please. So ये भी Okay, sir. complete हो गया. Next. Yes. Now dissolution. Dissolution of a firm by agreement is given in section 40, and it can be with consent of all the partners or per contract. Just a minute. MVS कुमार जी आप पढ़िए. Sure. By agreement, section 40 with the consent of all partners or per contractor. So compulsory is section 1, but one insolvent and the business becomes unlawful. So that's second occasion. On contingencies, section 42 governs expiry of the term and end of venture, death or insolvency of a partner. 3 cases. So the second is, fourth is by notice. Section 43, any partner can give a notice, written notice of their intention to dissolve. By the court, section 44, could be of unsound mind, permanent incapacity, misconduct, persistent breach, transfer of interest, perpetual loss, and just and equitable. These are all the things. So next is a liability continues to until the public notice of the dissolution is given. Section 45 governs, and settlement, section 48. Losses paid from profits, capital, partners individually. The second assets supplied, third party debts, partner advances, capital, residue in profit ratio. ठीक है, तो ये पॉइंट सारे क्लियर है. Yes. अमरिंदर कौर जी आपको क्लियर है पॉइंट्स ये सारे? Yes, sir. Okay. Yes. So this is partnership versus LLP versus company differences. The governing law on that feature is a governing law. Partnership firm means Partnership Act 1932, LLP 2008 Act it covers, Companies Act 2013. Legal status, no, not separate from partners, but separate body corporate in case of LLP and company. Liability, partnership firm unlimited and joint and several, and LLP and company is always a limited liability. Perpetual succession, partnership, there is no perpetual succession. Continuity will lost in case of partnership. But in the case of LLP and company, it is continuous for ever. The registration, partnership is optional, the other 2 are mandatory. Members 2 to 50. Here there is a 2, but there is no maximum in case of LLP. Even in the case of a public company also, no maximum limit. So yes. 2 to 200. In the case of audit, it's only for tax audit purpose, partnership firm to be done. But in the case of LLP and company, it's a mandatory. The limits are in LLP is greater than 25 lakhs or turnover greater than 40 lakhs. These are all the limits. So here there is a question for you, that there is an LLP. That LLP is having contribution exactly 25 lakhs. Then whether it is applicable. So what shall be? More than 25 बोला है. नहीं, एक बार LLP एक्ट खोलिए ना, वहां देखिए क्या लिखा. अच्छा, LLP एक्ट. अगर एग्जैक्ट होगा 25 lakhs या 40 lakhs, तो उस केस में क्या होगा? करवाना है नहीं करवाना? सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होंगी, एनुअल टर्नओवर एज वेल एज कंट्रीब्यूशन. क्या लिखा है एग्जैक्ट? पढ़िए. आप लिखा है. बेयरक से पढ़ रहे हैं? कहां से पढ़ रहे हैं? चैट जीपीटी. ना 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 ना, चैट जीपीटी, बेयरक से पढ़िए.
बेयर एक्ट सर, एक सेकंड। हाँ भाई, बेयर एक्ट आपके पास है नहीं तो मेरी साइट से ले लो। नहीं सर, मेरे पास नहीं है, मैं आपकी वेबसाइट से लेती हूँ। हाँ, वेबसाइट में आप नॉलेज बैंक में जाएंगे, नॉलेज बैंक हाँ में हाँ, जाइए, एक्ट्स में, एक्ट्स में जाइए आप, ये कॉर्पोरेट लॉज में, और कॉर्पोरेट हाँ, लॉज में एलएलपी एक्ट में चले जाइए। ये ठीक है एलएलपी सर। एक्ट आ गया आपका। और एलएलपी एक्ट में आप जा करके चले जाइए, ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर चैप्टर 7 में होना चाहिए मेरे को। चैप्टर 7 में सेक्शन 34 देख लीजिए, ये सेक्शन 34 है। इसके लिए फिर आपको रूल्स में जाना पड़ेगा। एक्ट में क्या लिखा कि आप रूल्स में जाइए। अब रूल्स में चलते हैं, तो ये आपको रूल्स में भी मिल जाएगा। अब नॉलेज बैंक में आप जाएंगे, आप रूल्स में जाइए, रूल्स में कॉर्पोरेट लॉज रूल्स, और कॉर्पोरेट लॉज में एलएलपी रूल्स। अब एलएलपी रूल्स में आपको मिलेगा चैप्टर 7, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में तो नहीं है, एक बार रूल और देखते हैं, दूसरा कोई रूल देखते हैं। रूल 25, रूल 26, रूल 25 है ये, रूल 25 में सर इसमें मैं आपका वो अदर लॉ में गई, इसमें कौन सा, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ये रूल 26, It says less than means it's not, but equal to means you have to. नहीं, कहाँ पर आप कोई सेक्शन नंबर या रूल नंबर बताइए। Number. सेक्शन में क्या लिखा है? सेक्शन में तो लिख दिया एज प्रेस्क्राइब। Hmm. आपको रूल नंबर तो बताना पड़ेगा ना। अब रूल नंबर के लिए आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वही अंडर विच रूल, ये पूछ सकते हो, ताकि ढूंढना ना पड़े आपको। तो कौन सा रूल कहता है ये? Rule 24. हम्म, रूल 24 सब सेक्शन 8। Hmm. अच्छा, ठीक है, तो रूल 24 बोल रहा है, ठीक है, रूल 24 देख लेते हैं। तो मुझे वो बेयर एक्ट आपके उसमें मिल ही नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं, नॉलेज बैंक में जाओगे आप, नॉलेज बैंक में हाँ, रूल्स पे चले जाओ। अच्छा डायरेक्ट रूल्स में क्या? ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें नीचे होगा ये। तो एमएस कुमार जी, देखिए रूल्स में कहा लिखा है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में मिलना चाहिए रूल 24। Very clearly written. Rule 24 of LLP rules 2009. हाँ, नहीं, सब रूल कौन सा है? सब रूल 8 है ना?
सब रूल एट क्या, सब रूल एट में कहा लिखा है आपके पास? अकाउंट शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स। यस, प्रोवाइडेड दैट ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, तो वर्ड क्या लिखा? डज नॉट एक्सीड, और लिखा है does not exceed in financial year 40 lakh rupees or whose contribution does not exceed 25 lakh rupees shall not be required to get its accounts audited। तो उल्टा लिखा, मतलब अगर एक्सीड नहीं करती है तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है, मतलब 40 लाख है अगर एग्जैक्ट भी है तो भी ऑडिट नहीं करवाना है, ये मतलब है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, रूल नंबर 8। आई होप नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो 8 नंबर पॉइंट पढ़िए, पढ़िए जरा एक बारी, 8 का प्रोवाइजो पढ़िए, पढ़िए यहां से, पढ़ सकते हैं? नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? या Yes, sir. एनीबडी एल्स? Yeah, it's too small actually. ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। It's okay. I rule 8, right? Rule 8, no? हाँ, Accounts of नहीं मैं जो है, ये यहाँ साइड में देख लीजिए, साइड में नजर आ रहा है आपको? साइड पैनल में, hmm. अंडर No, रूल, actually, under rule 24(8), an LLP is required to have its accounts audited by a chartered accountant unless it falls below the following thresholds: turnover does not exceed 40 lakhs, contribution does not exceed। तो देखिए, देर आर टू क्वेश्चंस टू दिस, ठीक है? पहला क्वेश्चन कि इफ the turnover is exactly 40 lakhs, then whether accounts are required to be audited? The answer is no. No. Second, contribution does not exceed 25 lakh rupees, then also no। और कंडीशन और है, एंड नहीं है यहां पर, ठीक है जी? hmm. तो क्या हो गया? द अकाउंट्स ऑफ एवरी लिमिटेड, मैं बेरक से पढ़ रहा हूं, द अकाउंट्स ऑफ एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल्स, प्रोवाइडेड दैट ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप whose turnover does not exceed in a financial year 40 lakh rupees or whose contribution does not exceed 25 lakh rupees shall not be required to get its accounts audited। तो अगर एग्जैक्ट 40 लाख है तो नहीं करवाना है, या कंट्रीब्यूशन भी अगर एग्जैक्ट 25 लाख है तो ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन अगर एक भी लिमिट एक्सीड हो गई तो आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है? ट्वेंटी फोर, तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अपनी, जस्ट अ मिनट। ये इसको मैं स्टॉप शेयर करके अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, ठीक है? अच्छा, इसको मैं बंद करता हूं, कोई बात नहीं। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको? स्क्रीन आ रही नजर? यस। नॉलेज बैंक में गए आप, नॉलेज बैंक में जाके आप सीधे रूल्स पे चले जाइए, रूल्स पे कॉर्पोरेट लॉज रूल्स पे चले जाइए और एलएलपी रूल्स पे चले जाइए। एलएलपी रूल्स में आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में चले जाइए, चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में रूल 24 में चले जाइए, और रूल 24 में 8 नंबर रूल है, ठीक है जी? ये नजर आ रहा है आपको? नहीं अभी? यस। तो ये है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? चलिए, अब दोबारा वहीं पर ही चलते हैं हम। जस्ट अ मिनट, अच्छा वो मैंने स्टॉप कर दिया।
यस, तो दोबारा हम लोग अपने उस पर आ गए। ठीक है जी। तो हम लोग एलएलबी पर थे। यहाँ पर थे। ठीक है जी। चलिए, तो अभेश कुमार जी प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ पर थे हम लोग इन केस ऑफ हम्म, ऑडिट, है ना। तो हम्म, ऑडिट में क्लियर हो गया, ये बिल्कुल जो ठीक लिखा हुआ है। अगर 25 लाख yes, होगा तो नहीं होगा। ठीक है, टर्नओवर हम्म, अगर एग्जैक्ट 40 लाख है तो ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। और वर्ड और भी ठीक लिखा है। ठीक है जी। और कंपनी में yes. कोई टर्नओवर का, कोई कैपिटल का कोई रूल नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। अगर आपने कंपनी बना ली तो आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है, चाहे आपकी टर्नओवर 0 है तब भी। यस, What about one person company? For that सेम है, also. इट इज कंपनी Mm, ओनली। yeah, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, दे आर अंडर कंपनीज एक्ट ओनली ना। correct. तो सभी में करवाना है वो तो। यस। Okay. This illustration, facts. A, B, and C are partners in an unregistered firm. C without authority buys goods on credit terms from T in the firm name for the usual business. The firm refuses to pay. He sues the firm. Also sues the C for the loss. This is the case. T suit against the firm. C is an agent of the firm. Section 18 governs that buying goods for usual business and within the implied authority. Section 19. The, actually, this suit is a valid kind of thing. What is that we are talking here? This side. राइट राइट। Okay. Firm bound liability joint and several. Section 25. Non-registration is no bar to a third party. Section 69. T succeeds in this suit against the firm. But in the case of नाउ हु A इज suit, टी? हु इज टी? टी इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स, yes. है ना। Yeah. A suit against C. Uh, नाउ ए A एंड and सी C, आर पार्टनर्स। यस, यस प्लीज Section प्लीज 61 bars a partner from Section 69(1) of bars a partner from suing co-partners on a contractual right. A suit is not maintainable until the firm is registered. So therefore, the conclusion is that register the firm and enforce the rights between the partners. नाउ एलएलपी एक्ट। यस प्लीज। Okay. LLP Act, nature and partners. The body corporate, separate legal entity with perpetual succession. Indian Partnership Act does not apply. Any individual or body corporate may be a partner. Ineligible, undischarged, insolvent, unsound mind, pending insolvency. Minimum 2 partners, below 2 for or greater than 6 months. Remaining partner personally liable. Small LLP 2021 Act, contribution less than 25 lakhs and turnover greater than less than 40 lakhs for the partnership. So I there mean is a LLP. concept of small LLP also. Now please explain this point, minimum 2 partners, because sometimes they ask questions on this. Minimum 2 partners क्या लिखा? What is this point actually? The point here is that if the number of partners is reduced below 2, that means say one dies, then you cannot continue for more than 6 months. If you continue for more than 6 months, then the remaining partner will become personally liable. This is the meaning. Okay. There are 2 partners in an LLP. You can form a LLP with 2 partners, right? One of सर them dies and you continue the business for more than 6 months. Then the remaining partner will be personally liable. तो सर पर्सनली लायबल के लिए पार्टनर तो एक ही बचा ना फिर। तो एक ही बचा, हाँ, तो वही पर्सनली लायबल होगा, मतलब अपने आप वो देगा सारे, चाहे पर्सनल हाँ प्रॉपर्टी में हाँ से दे। समझ हाँ, गए। हम्म, ये But actually partnership does not exist, right? That is what I heard many cases. नो See, दैट इज the ट्रू, बट Hmm. एलएलपी है ना ये तो। एलएलपी में क्या होता है, नॉर्मली यू आर नॉट हेल्ड पर्सनली लायबल। सो दिस इज अ Okay. केस वेयर डिस्पाइट बीइंग एलएलपी यू आर बीइंग हेल्ड पर्सनली लायबल। Okay. भाई नॉर्मली क्या है इन केस ऑफ एलएलपी,
your, even if there is a loss in the LLP, then they cannot attach your personal assets. But in this case, they will be able to attach your personal assets also. This is the meaning. Okay. Yes, please. Designated partners, minimum two DPs, at least one resident in India, greater than 120 days, amended 2021. And all body corporate partners, two individual nominees as DPs. Each DP obtains a DP designated partner identification number, responsible for all compliance and filings. Vacancy filled within 30 days if only one DP. All partners deemed DPs. Penalty, section 10, LLP 10,000 rupees plus 100 rupees per day, maximum of rupees 1 lakh. Partner, partner 50,000 rupees. I mean, partner is liable, right? One question, whether an HUF can become a partner in an LLP? Please answer this question. HUF, whether HUF or a partnership firm can become a partner in an LLP? This is the question. No, sir. Yes, it is possible. भाई कोई कह रहा है पॉसिबल है, कोई कह रहा नहीं है, तो थोड़ा रिसर्च करो ना, देखो कहां पर क्या लिखा। दो क्वेश्चन है, HUF, whether HUF can become a partner, और सेकंड है whether partnership firm can become a partner. तो 2 मिनट देखो कहां लिखी है बात। सेक्शन 5 में देख सकते हो आप। Yeah, section 5 says no, cannot. Only individuals and body corporates. Yes. Partners. हाँ, तो सेक्शन 5 क्या बोलता है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पार्टनरशिप फर्म इज एन इंडिविजुअल? द आंसर इज नो। वेदर HUF इज एन इंडिविजुअल? द आंसर इज नो। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल, वेदर ए कंपनी कैन बिकम ए पार्टनर इन एन LLP? Yes, sir. Body Yes. corporate. हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो सेक्शन 5। चलिए नेक्स्ट, वो क्वेश्चन पूछता है इस पर नॉर्मली। नेक्स्ट। So partner not personally liable for the acts of LLP or other partner, section 28. Partner liable for own wrongful acts or omissions, holding out, section 29. नहीं, पहले लेफ्ट साइड वाला पढ़ लीजिए ना, इनकॉर्पोरेशन एंड नेम। हाँ, incorporation. Okay, incorporation name greater than or equal to 2 persons subscribe to the incorporation document filed with the registrar. Certificate of incorporation within 14 days, conclusive proof. Registered office is mandatory. Change filed with the registrar. Name ends with limited liability partnership or LLP. Name not identical or similar to existing company, LLP or trademark. Or would a default penalty 500 rupees per day, maximum of 50,000. Liability framework, LLP liable to full extent of its assets, section 27. Partner not personally liable for acts of LLP or other partners. Partner liable for own wrongful acts. Holding out, section 29, represents as partner personally liable. Fraud, partner and LLP unlimitedly liable. Whistleblower protection is there, section 30. Is a requirement form and form timeline and notes. Statement of accounts and solvency, form 8 by 30th. Normally they will ask a question on this, statement of account and solvency. इसको तो जरूर याद रखना है आप। Form 8 by 30th October.
notes signed by two DPs, audit 1 month, audit if contribution is greater than 25 lakhs or turnover greater than 40 lakhs. Annual return Form 11 within 60 days of financial year close by 30th May, and mandatory for all LLPs. Incorporation Form LLP with the registrar of the state registered office, and change in partners or TPs Form 4 within 30 days, effect in case of notice effective only on filing. Change in registered office 15 Form 15 before change or effective on filing. And conversion to LLP Form 17 or 18 company effective from the date of registration certificate. So if a firm wants to change to LLP, they have to file Form 17. And if a company wants to change to LLP, then they will file Form 18. This is 2021 Amendment Act. Enhance the punishment Section 71A, general penalty 25,000, 5 lakhs, up to 5 lakhs. Adjudication of penalties is Section 76A, decriminalization of compoundable defaults. ठीक है, चल तो इसमें क्या याद रखना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट सॉल्वेंसी खास तौर से, और दूसरा ये कि नॉर्मली क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है वो, एचयूएफ पे पूछ लेगा कि whether HUF can become a partner in an LLP. चलिए LLP conversion and recent amendments. Conversion into LLP. Firm LLP Section 55 Schedule 2 private company. LLP Section 56 Schedule 2 Schedule 3. मतलब ये है कि if a firm wants to convert into LLP, then it is governed by Section 55. And if a private company wants to convert itself into an LLP, then it is governed by Section 56. Yes. Unlisted public company means LLP, Section 57, Schedule 4. All assets, liabilities, and licenses vest in the LLP, effective from the date of the registration certificate. Conversion is a pending proceedings continue, and partners prior to liability survives. Prior liability survives. Key amendments: small LLP is LLP introduced, lighter and compliance and lower fee. ये जो small LLP है, इसके लिए क्या threshold है? What is the threshold for small LLP? Small LLP अभी देखा था ना हमने? Yeah, 25 lakhs. Less than 20. हाँ, जिसका ऑडिट नहीं होना, बेसिकली आप ऐसे याद रख लो, जो इसका ऑडिट नहीं होना है वो स्मॉल LLP में आ रही है ना. तो स्मॉल LLP के लिए ये जो है लाइटर कंप्लायंस है और लोअर फीस. यस. Precedent threshold for DP cut to 120 days. How much it was? It cut to 182 days था ना पहले, अभी 120 days हो गया. अच्छा. Many offenses decriminalized. Civil adjudication via Section 76A. वो बेसिकली क्या किया इन्होंने कि पहले इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस थे वो हटा दिए, अभी कह दिए कंपाउंडेबल है, यू कैन पे फाइन एंड गेट अवे. यस. Special status startup LLP recognized, and LLP amendment rules 2023 web-based reform statement of beneficiary interest and contribution. These are the key amendments. Now limited liability. Yes. Case study. So 2 individuals and 1 private company propose to form an LLP and wish to understand the requirements relating to partners and designated partners. But what's the minimum number of partners? 2. Who must be a designated partner and how many? Designated partner 2. How many? Must a designated partner? The question is whether a private company can also become a designated partner. Yes or no? Yes, sir. Yes. Body corporate. नहीं, designated partner की बात कर रहा हूँ. Okay. But my question is, there is an individual and there is a private limited company, right? They want to form an LLP. Whether they can form, yes or no? They can form. They can form. Very good. But the private limited company shall indicate that who will be the person responsible. So they have to name an individual who will be responsible, right?
Must a designated partner be resident in India? Yes, sir. Greater than 120 days. More than 120 days. नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वेदर ही हैज टू नेसेसरीली बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, या नॉन रेजिडेंट को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. नॉन ऑर्डिनरी लाइफ को भी बना नहीं, 120 डेज, मोर देन 120 डेज रेसिडेंट ही बन पाएगा सर. कैन ए बॉडी कॉर्पोरेट बी ए पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर? व्हाट, देखते हैं आंसर्स देखते हैं, ठीक है. चलिए, So तो minimum of मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है? 2 पार्टनर्स विद नो मैक्सिमम लिमिट. और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए क्या है? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स. Now suppose there are 2 companies, they want to form an LLP, whether they can form? The answer is yes. 2 कंपनीज हैं, दोनों कंपनी मिल करके एलएलपी बनाना चाहते, बना सकते हैं कि नहीं? The answer is yes. So even if all the partners are body corporate, they must nominate 2 individuals as designated partners. Section 7, subsection 1. so the designated partner means only individuals can be a Right, designated right. partners. Because they will be held responsible, no? Okay. Yes. They have to sign. Hmm. Now regarding designated partners, at least 1 designated partner must be resident in India and his stay should be 120 days or more in the financial year. It was reduced from 182 days in 2021. Okay. A body corporate may be a partner, but a designated partner must be an individual or an individual nominee of a body corporate. Okay. A designated partner identification number. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन आए? पहला क्वेश्चन, देयर आर 2 कंपनीज, वेदर दे कैन फॉर्म एन एलएलपी? द आंसर इज यस. 2 कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं है तो भी कर सकते हैं, बट दे हैव टू नॉमिनेट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. ठीक है. एंड आउट ऑफ दैम 1 मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. क्लियर है बात सारी यहां तक? यस सर. चलिए नेक्स्ट. A partner of an LLP commits a fraud on a third party in the course of the LLP's business. Separately, an outsider knowingly permits himself to be represented to a lender as a partner of the LLP. So these are the facts of the case. That what shall be the liability? But this is a misrepresentation, right? Yes. Is the LLP liable for partners' wrongful act in the course of business? No, I don't think so. एक बार पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चंस, then we'll go to these sections. Okay. Are the other partners personally liable? What is the effect of the fraud under Section 30? What is the liability of holding out under Section 29? To what extent is the LLP liable for its obligations? Now there are 2 facts. It says an outsider knowingly permits himself to be represented to a lender as a partner of the LLP, right? So an LLP went to a funding agency and one person, he was an outsider, he went there and he represented himself as a partner. So whether he can be held liable? The answer is yes. So it is governed by Section 29, liability by holding out. Okay. Let us see the answers. So first question, is the LLP liable for a partner's wrongful act in the course of business? Yes, the LLP is liable for wrongful acts or omission of a partner done in the course of business or with its authority. Okay. Second question, are the other partners personally liable? The answer is no. A partner is not personally liable. Merely by being a partner, liability is limited, but a partner remains liable for his own wrongful acts. Okay. But for his own wrongful acts, unlimited. Yes. वो तो है, आ गया ना, next में आ गया ना. Where the LLP or partner acts to defraud the creditors or for a fraudulent purpose, the liability of the LLP and the partners involved is unlimited. Okay. Now, partner by holding out, a person who represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner is liable to anyone who gave credit on that business. Okay. Or last में, to what extent is the liability? LLP liable for its obligations? The LLP is liable to the full extent of its assets. ठीक है.
Any questions on this before we move further? नहीं तो एक दो बार और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सेक्शन भी एक बार खोल के देख लीजिएगा सारे। यस, नेक्स्ट। An LLP has a partner contribution of 30 lakhs and a turnover of 50 lakhs in the financial year and is preparing its annual filing. Which annual statement must it file? When is the Form 8 is due? When is the Form 11 due? Is audit mandatory for this LLP? What is the consequence of delay in filing? So these are the questions. ठीक है? Now let us see the answers. Statement of account and solvency Form 8 और annual return Form 11, ये दो तो याद रह ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 है और एनुअल रिटर्न है फॉर्म 11। तो फॉर्म 8 इज ड्यू बाय 30th October विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 months और फॉर्म 11 इज ड्यू विद इन 60 days। ठीक है। और ऑडिट इज मैंडेटरी बिकॉज कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 lakhs और टर्नओवर एक्सीड्स 40 lakhs, दे आर बोथ अप्लाई। तो कंट्रीब्यूशन तो 30 लाख हो गया, 25 से ऊपर हो गया ना, और टर्नओवर भी 40 से एक्सीड हो गई, तो ये ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। और डिले अगर होगा तो क्या होगा? डिले अट्रैक्शन एडिशनल फीस। ये ग्रेडेड है बाय पीरियड एंड स्मॉल या नॉन स्मॉल। ठीक है, तो आपको देखना है ये स्मॉल एलएलपी थी या नॉन स्मॉल है, उसके हिसाब से। यस, नेक्स्ट। A private company wishes to convert itself into an LLP and seeks to understand the conditions, the vesting of assets and the effective date of conversion. Is conversion of a private company into an LLP permitted? Which schedule governs such a conversion? What are the principal preconditions? What happens to assets, liabilities, and pending proceedings? From what date does the conversion take effect? देखिए ऐसा है, they may not ask you a question on which schedule. तो schedule you may not remember, but the other questions they can ask. तो first question, is conversion of private company into an LLP permitted? Yes or no? Yes, sir. हाँ, कन्वर्जन में कोई दिक्कत है। ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल प्री कंडीशंस, क्या होनी चाहिए कंडीशंस की, ये देख लेते हैं। तो यस, पहला क्वेश्चन, ए प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इनटू एन एलएलपी, और यहाँ पर थर्ड शेड्यूल है। थर्ड से याद रखने की खास बात नहीं है, ये शेड्यूल वोड्यूल पे नहीं पूछेंगे नॉर्मल। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्रिंसिपल प्री कंडीशंस? नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट सब्सिस्टिंग ऑन एसेट्स एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब मेन बात क्या है कि ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है। सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज ऑलरेडी अवेल्ड लोन और उसने अपने एसेट्स को मॉर्गेज किया हुआ, तो क्या वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। नो। हाँ, तो उस केस में कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट सब्सिस्टिंग नहीं होना चाहिए ऑन एसेट्स एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो भी मेंबर्स है कंपनी के, मेंबर कौन होता है? whose name is registered in the whose name is entered in the register of members। ठीक है। whether all shareholders are members, the answer is no। सारे शेयर होल्डर मेंबर नहीं होते। मेंबर कौन है? जिसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर्ड में एंटर्ड है। ऑल मेंबर्स बिकम पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी एंड नो वन एल्स। ऐसा नहीं कि किसी और कोई भी आ जाए उसमें। एंड अप टू डेट फाइलिंग और कंसेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैपेंस टू एसेट्स, लायबिलिटीज एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग्स? भाई प्राइवेट लिमिटेड आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? सो ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, राइट्स, प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस दे शैल वेस्ट इन द एलएलपी, और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू बाय और अगेंस्ट इट। द कंपनी इज डीम्ड डिसॉल्व्ड। ठीक है। और कन्वर्जन कब से इफेक्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन इशूड बाय द रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट। An LLP's partner reduced to one and it continues to carry on business in that state for 7 months. It also seeks to know whether it qualifies as a small LLP. What is the minimum number of partners? What is the consequence of carrying on with one partner beyond 6 months? What is a small LLP under 2021 amendment? What benefits that small LLP status confer? Is there a maximum limit on the number of partners? So these are the questions. पहला, मिनिमम नंबर तो पता ही है, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए?
2. और व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैरिंग ऑन विद वन पार्टनर बियॉन्ड 6 months? Personal liability. पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी. व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? Less Uh, than 24, 25 and 40 turnover. 25. वेरी गुड. हाँ बिल्कुल, वो ऑडिट वाला पॉइंट याद रख लो आप. ठीक है. व्हाट बेनिफिट डज स्मॉल एलएलपी स्टेटस कन्फर? स्मॉल एलएलपी में क्या बेनिफिट्स होते हैं? ऑडिट नहीं करनी पड़ती है. ऑडिट के अलावा, ऑडिट तो नेचुरल हो ही गया, ऑडिट के अलावा क्या बेनिफिट्स है इनका? फीस भी अलग है और पेनल्टी भी अलग है. ठीक है. लोअर फाइलिंग फीस है, लाइटर पेनल्टीज है और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस. ठीक है. इज देयर ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स? एलएलपी में कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? नो सर. हाँ. तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 says that there is no maximum limit on the number of partners in the LLP. ठीक है. अब फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी पर भी सवाल पूछ चुके हैं, केस स्टडी भी आ चुकी है, तो थोड़ा सा आपको जरूर देख लेना है फॉरेन एलएलपी के बारे में भी. यस, पढ़ लीजिए एक बार. foreign LLP key provisions, meaning and establishment. Foreign LLP is an LLP incorporated outside India and that establishes a place of business in India. Section 2(1) clause M. Section 59 empowers the central government to make rules for foreign LLPs. LLP rules 2009. On establishing a place of business, file form 27 within 30 days with the register. Attach certified incorporation document, particulars of partners, DPs, principal place of business. Documents must be in English, else a certified English translation. So representatives and forms and service. At least 2 authorized representatives, individuals resident in India to accept service and ensure compliance. Form 28, alteration and incorporation document of partners or DPs registration certificate. Form 29, change in authorized representatives or principal place of business or closure of place of business. Service is valid if left at or posted to declared place of business or an authorized representative. On closure, notice in Form 29, filing obligations cease from the date of notice. Yes. So, Sigma LLP, registered in the United Kingdom, opens an office in Mumbai to carry on consultancy business in India for the first time. Is Sigma LLP a foreign LLP? Which form must be filed within what time? What documents accompany the filing? How many authorized representatives are required? With whom it is form filed? देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो पहला, तो ये सिग्मा एलएलपी है, क्या ये फॉरेन एलएलपी है? बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड किंगडम. नाउ दे ओपन एन ऑफिस इन मुंबई. सो फॉरेन एलएलपी क्या है? इट इज एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया दैट एस्टैब्लिशेस ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एज ए फॉरेन. ठीक है. और फॉर्म कौन सा फाइल करना है? फॉर्म नंबर पे नॉर्मली दे विल नॉट आस्क. फॉर्म 27 है, विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस. और क्या क्या लगाना है, ये चीज लगानी है. और क्या होना चाहिए? व्हाट इफ द मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव्स बी रेजिडेंट इन इंडिया? तो द आंसर इज यस, दे मस्ट बी इंडिविजुअल्स रेजिडेंट इन इंडिया. अब सर्विस, सर्विस क्या है? सर्विस एट द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड रिमेन्स वैलिड. मतलब आपने एक इंडिया में बिजनेस का एड्रेस दे दिया, वहां पर कोई है नहीं. ठीक है. ये आपने चेंज कर लिया, तो अगर कोई नोटिस जाता है, अगर एड्रेस पर सर्व हो गया तो दैट रिमेन्स वैलिड. ठीक है. अब आपने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया, आपने मुंबई में एक एड्रेस पर ऑफिस खोल दिया, रजिस्ट्रार को बता दिया, बाद में अपने ऑफिस चेंज कर लिया एंड यू डिड नॉट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार. सो फेलियर टू अपडेट द एड्रेस डज नॉट इनवैलिडेट सच सर्विस एंड इटसेल्फ अट्रैक्ट्स पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. A foreign LLP changes the designated partners abroad and some months later shifts its India office from Pune to Hyderabad and replaces one authorized representative. Which form notifies a change in the incorporation document of DPs or the foreign देखिए ऐसा है, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्म, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जरूर पता होना चाहिए. विद इन व्हाट टाइम मस्ट सच चेंजेस बी फाइल्ड? सो इफ देयर इज अ चेंज, देन विद इन हाउ मच पीरियड you have to file, you have to intimate the registrar. ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए. It is within the time prescribed under the rules. Generally 60 days है for form 28 alterations
और 30 डेज है फॉर द रिलेवेंट फॉर्म 29 चेंजेस। ठीक है, और 28 क्या है? 28 के लिए अगर कोई चेंजेस है तो 60 डेज में बताना है। ठीक है, और अगर 29 में चेंजेस है तो वो 30 डेज के अंदर बताना। अब 28 और 29 क्या है वो देख लेते हैं। 28 है ऑल्ट्रेशन इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन है इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स या पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको बताना है 60 डेज में। और 29 में क्या है? इफ देयर इज ए चेंज इन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्लोजर, तो उसके लिए आपको बताना है विद इन 30 डेज। इतना कम से कम याद आपको रखना। जरूरी नहीं कि फॉर्म नंबर याद रहे, कोई खास बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन बना रखे हैं सही, बट लेकिन ये है कि टाइम कितने में बताना है ये जरूरी होना चाहिए। और 28 में क्या पर्टिकुलर्स है, 29 में क्या पर्टिकुलर्स है, इतना आपको जरूर याद रखना। ठीक है, और फॉरेन एलएलपी क्या होती है ये ध्यान दें। ठीक है, तो कई बार वो पूरा क्वेश्चन फॉरेन एलएलपी पर भी दे चुके हैं। अब मान लो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आंसर कर पाओगे आप। 8 नंबर का सवाल आता है। यस प्लीज। A creditor in India wishes to serve a legal notice on foreign LLP that maintains a place of business in Delhi and has appointed authorized representatives. How is service affected on a foreign LLP? What is the role of an authorized representative? Must the representative be resident in India? What if the place of business address changed but was not updated? Can the LLP's document be in a language other than English? So here, question number 4, third and fourth is important. तो सर्विस अगर जो भी एड्रेस है दैट रिमेन्स वैलिड। आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया, आपकी लायबिलिटी। ठीक है, और इसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है फॉर नॉन फाइलिंग। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। Shall I read? हाँ, यस। A foreign LLP decides to wind down and discontinue its place of business in India, while certain Indian liabilities incurred earlier remain outstanding. What must the foreign LLP do on ceasing its place of business? When do its filing obligations end, or its pre-cessation liabilities extinguish? Can a foreign LLP be wound up under Indian law? Which provision empowers the rules governing the foreign LLPs? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 29। ठीक है, Must और file one. जो liabilities and obligations incurred before cessation, they are not extinguished and remain enforceable। ठीक है, चलिए, तो एक बार इनको देख लीजिएगा आप। नाउ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये सारा है, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना, फास्ट ट्रैक मर्जर बेसिकली। तो वंस यू गो थ्रू दिस एंड देन यू कैन डिस्कस इन दी ग्रुप। ठीक है, काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आज का we were having the last session today, and now we will remain active in the group, and if there is a genuine need that okay you want me to take another class, so I am ready for that also. But before that I would like you to concentrate for say 7 days or 10 days and identify the topics on which you need clarity. So we can do one-to-one discussion also on telephone. We can have a class also if 4 or 5 of you want, and you want clarity on a particular topic, right? So thank you so much. And if you want any video lecture on any topic, you can just write to me. Financial awareness, general awareness. So there are video lectures which are already done on all these topics. So that also you can go through. And if required, we can discuss in the group also. We can have one-to-one meeting also on phone, or we can have a class also in case 2-3 people so desire. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir. Okay.